हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लाइफ प्रोसेस का जो है चैप्टर करने वाले हैं क्लास 10th का। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेस इज़ द बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड सर्वाइव द लाइफ। दीज प्रोसेस आर फोर टाइप्स: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। तो टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जिससे कि न्यूट्रिशन मिलता है। एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन से ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। एक्सक्रेशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अभी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एमआरएस एंड ग्रेन। इसको हम याद रख लेंगे। एमआरएस से क्या बनता है? मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी। और जी से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन और न्यूट्रिशन। तो हमें क्या याद रखना है? एमआरएस, ग्रेन। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस ऑफ इनटेक करने की है और यूटिलाइज करने का है फूड को, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल है प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, वी नीड न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रोफिक और केमो ऑटोट्रोफिक। और यहाँ से हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन से क्या रहेगा? होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड by the process of photosynthesis which is carried out by green plants. Making of food with the help of light is called photoautotrophic nutrition. Example: green plants. Making of food with the help of chemicals is called chemoautotrophic nutrition. सल्फर बैक्टीरिया एग्जाम्पल के लिए रहेगा। अब है ऑटोट्रोफिक organisms which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs. Organisms which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs. Autotrophic, auto plus trophic, self nourishment, जो खुद से अपना नरिशमेंट करते हैं, यानी कि खुद से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, plants are autotrophs because they make their own food by the process of photosynthesis. Photosynthesis क्या होती है? Process by which photoautotrophs prepare their food with the help of light, carbon dioxide, water, chlorophyll. In this process, food is prepared in the form of glucose C6H12O6 and oxygen O2 is released as a waste of material. Reaction of photosynthesis: 6CO2 plus 12H2O, chlorophyll, sunlight. C6H12O6 plus C6O2 plus H6H2O, glucose. The process of photosynthesis takes place in leaves of plants like this. अब लीफ में कैसे होता है? ये वेन्स होती है, ये स्टाक होता है, ये पेडुंकल होता है, पेटियोल होता है, स्टोमाटा होता है, मार्जिन और लेमेला होता है, मिडरिब होती है, ये एपेक्स होता है बिल्कुल कॉर्नर वाला, और ये वेन्युलस होते हैं।
यहाँ पे पत्ते के ही अंदर जो लीफ होती है उसके ही अंदर यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये एयर स्पेस होता है, बीच बीच में जो छिद्र होते हैं। स्टोमाटा होता है यहाँ पर, गार्ड सेल्स लोअर एपिडर्मिस, मेसोफाइल सेल्स, स्पॉन्ज सेल्स, पेडिसेल्स अपर एपिडर्मिस, ए क्यूटिकल गार्ड सेल्स स्टोमाटा। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये तरीके से हमने काट करके लीफ को सेक्शन वाइज दिखाया गया है। थोलोकोइड्स, क्लोरोफिल एंड ग्रेना, लीफ, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, थोलोकोइड्स, ग्रेना और क्लोरोफिल। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. Light energy, chemical energy, ATP. मैं एक बार 1 मिनट रुको बस, मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ, बस प्लग अनप्लग किया मैंने, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी तो इसलिए मैंने इसको अनप्लग कर दिया। ठीक है, अभी करते हैं भाई आगे। नोट, when light energy falls on water molecule, it breaks in hydrogen and oxygen, and this process is known as photolysis. Photolysis of water, reduction of carbon dioxide to carbohydrate. When H2O breaks into O2 and H2, O2 release into atmosphere, and H2 with CO2 make carbohydrate. Raw materials of photosynthesis. Leaves of plants needs 4 things as raw materials of photosynthesis: light energy from sunlight, carbon dioxide from atmosphere, water from roots, chlorophyll which is already present in leaves. Plants stores glucose in form of starch, humans stores glucose in form of glycogen. जो प्लांट स्टोर्स करते हैं ग्लूकोज को वो स्टार्च के फॉर्म में और ह्यूमंस ग्लाइकोजन के रूप में। Stomata, tiny pores present on the surface of leaves are called stomata, which helps in exchange of gases in transpiration. More number of stomata present on lower surface of leaves in order to prevent water loss. Opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata is regulated by guard cells. Guard cells यहाँ पर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ये छोटा सा, ये cyanide cells, stomata pore. When water enters in guard cells, they swell up and stomata pore opens. H2O open और ये closed. When water leaves the guard cells, they shrink and stomata pore close. Photosynthesis in desert plants. Desert plants cannot open their stomata in daytime because if they open stomata during day, then due to intense heat, water evaporates fully from leaves and plants will die. So they open their stomata during night, then CO2 enters inside leaves and leaves convert CO2 in an intermediate as malic acid. During day, chlorophyll absorbs light from sun and starts photosynthesis. Heterotrophic nutrition, kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. Organisms which shows heterotrophic nutrition are known as heterotrophs, animals or fungi. Heterotrophic nutrition is of 3 types: holozoic, saprophytic, parasitic.
Halozoic concept of organisms feed by intaking of whole food materials. Food is digested and absorbed inside the bodies. Organisms which are holozoic are categorized into three types: herbivores, carnivores, or omnivores. Feed only green plants. Carnivores consider them feed only fresh. Omnivores feed both green plants and flesh. Saprophytic concept organisms which show this nutrition are known as saprophytes. Organisms feed on dead and decaying materials. Food is digested externally and the nutrients are absorbed. Bread, mold, mushroom decomposes. Parasitic organisms derives nutrition from plants or animals with killing them. Obtain nutrition by living on or inside the host. Organisms which show this nutrition are known as parasites. 5 stages of nutrition: ingestion, feeding, taking in food, digestion, breaking, breakdown of complex food into small substance, digestion, removal of metabolic waste, absorption, digestion. Food is absorbed into body cells. Assimilation, absorbed food is used to provide energy or form new protoplasm. Nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. Amoeba is a holozoic unicellular and eukaryotic organism, irregular in shape. A finger-like extension called pseudophore helps in capturing of food and movement. It is a type of protozoa. Amoeba pseudophore, extension of cell membrane, capture food, taken food, withdraw food.